Continue case. Item 2 from supplementary list. But something is left, for that reason. Sorry? Something was left, not there. What was left? I was about to dictate the judgment. I just for that reason. Yes, Annex 10 is very relevant, my lord. I have demonstrated, my lord. But I want to read, my lord, because the fluctuating tendency of the disciplinary authority, my lord, what has been observed, that may be looked into, my lord. Annex 10. Yes, my lord, 10. At page 111. Kindly have a look for a moment. ये तो थोड़ा सा पढ़ देते हैं annex. Page 111. हाँ, yes. 111 में तो Annex 14. Yes. ये क्या है? इसमें लास्ट है कि हम पूरा पढ़ रहे हैं. विज्ञापन संख्या स्वयं पुलिस अवर चूंकि इन लोगों का तो लॉन्ग लिटिगेशन चल रहा था अपॉइंटमेंट के लिए, उसी में निर्देशानुसार उपयुक्त विषय फौजदारी केस नंबर 100 में दोषमुक्त किए जाने के फलस्वरूप पुनर्नियुक्ति हेतु समर्पित आवेदन के आलोक में उल्लेखनीय है कि पुलिस उप महानिरीक्षक 100 सैन्यादेश संख्या 100 के द्वारा आपको सेवा से बर्खास्त किया गया. विज्ञापन संख्या 1/2000 दैट वाज चैलेंज एट दैट टाइम के तहत पुलिस अवर निरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर की गई नियुक्ति के संबंध में गृह विभाग के निर्देशानुसार महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड राज्य की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा नियुक्ति के संपूर्ण मामले की पुनर्समीक्षा की गई. समीक्षोपरांत समिति द्वारा पूर्व में परिचारी कंपनी कमांडर के पद पर नियुक्त कुल 42 अभ्यर्थियों के चयन त्रुटिपूर्ण एवं विज्ञापन में निर्धारित मापदंड के विरुद्ध पाए जाने के कारण हटाए जाने के अनुसार. इस संदर्भ में स्पष्ट है उक्त कांड में दोषमुक्त होने के बावजूद भी विज्ञापन संख्या 100 चयनित अभ्यर्थियों की पुनर्समीक्षा हेतु गठित समिति द्वारा आपको भी चयनित सूची से हटाने की अनुशंसा की गई. At that time it was decided that you have been terminated on that day. So it has been considered first. नहीं अतः स्थिति में अतः उपयुक्त स्थिति में आपको कांड में दोषमुक्त होने के बावजूद, क्योंकि दोषमुक्त को ये मान रहे हैं कि ठीक है आप दोषमुक्त है, but you have been terminated along with others because the advertisement was challenged at that time. So first instance, it was considered you have been acquitted, of course, but advertisement was challenged and you along with others. So this is the things, my lord, because the disciplinary authority consider my acquittal and my lord जो बंदी पत्र भी दिया गया था इनके द्वारा जब while he was in custody, very vivid reply was given, of course, my lord, it was not but बंदी पत्र दिया गया जो वहाँ while he was in custody or under what circumstances he remained in why he went there. What is the period of custody? Period of custody तो रहा 2013 से 13 सरेंडर करने के बाद एक्यूटल के बाद ही निकले हैं. हाँ, कंप्लीट एक्यूटल. सरेंडर कब की? सरेंडर वही जो 2013 में 30 डेट बताइए. डेट उसमें डिस्कशन में लिखा हुआ क्लियर कट. तीन 4/2013 को आरएस प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी 3/4/2013 को सरेंडर किए. मतलब फाइनली एक्यूटल हो गया. एक्यूटल का डेट एक्यूटल का 10/3/2017. नहीं एक्यूटल ठीक है. 10/3/2017 को एक्यूटल हुआ इनका. इन्होंने जो अपना एप्लीकेशन फॉर लीव दिया था, व्हाट वाज द पीरियड? दिनांक 8/4/2013 को स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने के बाद आवेदन में लिखकर सदर अस्पताल गिरिडीह द्वारा दिनांक 2/4/2013 को जारी चिकित्सक 8/4/2013 को इनका एप्लीकेशन था और उसका जाली चिकित्सा पत्र दिया था 2/4/13 को जारी. इट वाज जारी चिकित्सक पर्ची संलग्न. मतलब दिस लेटर वाज annexed along with it saying that he was not well. He was not well
and he asked for the subsequently he asked for the leave for to be extended. तो 8/4/2013 को तो वो खुद नहीं आए होंगे ना, क्योंकि 3/4/2013 को तो सरेंडर ये किए तो थे। चार्ज है कि इन्होंने जो है बिना कारावीक्षण से फॉरवर्डिंग कराई ये एप्लीकेशन भेज दी। अच्छा, वहां से नहीं आया था, नहीं, अब किसी और के थ्रू आया किसी होगा और के थ्रू। कि बीमार है। बीमार। चलिए। प्रोबेशनर थे, प्रोबेशन हाँ, ये तो एडमिटेड है और लिटिगेशन चल रहा था, सेपरेट लिटिगेशन फॉर देयर अपॉइंटमेंट along with others. heard the learned counsel for the parties. This writ petition has been filed for the following relief. The learned counsel for the petitioner submits that the petitioner had participated in selection process for appointment of constable, Constable, commandant. आप अपना ऐसा equivalent आप अपना written representation में क्या लिखें? Appointment of commandant लिख दें? company commandant, equivalent to sub inspector of police. Appointment of company commandant. Appointment of company commandant pursuant to advertisement number 1 of 2008. And he was appointed on 9/11/2012. He submits that litigation was going on in connection with the selection process. Which ended finally in the And which ended finally in the year 2017 after Which- decision of the apex court. which ended finally in the year 2017. The learned counsel submits that the petitioner was a probationer and on 3/4/2013 he surrendered before the court in connection with one FIR registered under section 147, 148, 149, 302 of IPC and section 27 of the Arms Act and section 3, 4 and 5 of the Explosive Substance Act, which was instituted way back on 18/7/1997. He submits that the FIR was lodged against Rameshwar Sao, son of Teko Sao, and name of the petitioner as per his matriculation certificate is Ramesh Kumar Sao, son of Teklal Sao. He submits that the petitioner was not aware about the pendency of the criminal case and and the petitioner, and it is a specific case of the petitioner that petitioner is not Rameshwar Sao but he is Rameshwar Kumar Sao. Ramesh Kumar. Sorry, Ramesh Kumar Sao. उसमें रामेश्वर है. जी. The learned counsel submits that however, the petitioner after surrender faced trial. Inquiry rather because he was juvenile, he has been declared. Okay. Faced inquiry as at the relevant point of time in the year 1997, the petitioner was a juvenile. And as none of the witnesses appeared to support the case, the petitioner was ultimately acquitted. The order of acquittal was passed
on 10/3/2017. On account of his arrest, the petitioner was put under suspension on 16/4/2013. The Learned Counsel has further submitted that the acquittal of the petitioner was taken into consideration by the disciplinary authority by the competent authority by letter number 379 dated 10/4/2017, wherein it was recorded that the petitioner has been acquitted, but in spite of his acquittal, he cannot be taken back in service as the matter regarding recruitment arising out of advertisement number 1 of 2008 was still pending. The Learned Counsel submits that as the petitioner had no knowledge about the criminal case at the time of recruitment, and he came to know about it, and immediately thereafter he surrendered and he has been ultimately acquitted. Therefore, the respondents were not justified in dismissing the petitioner. He has also submitted that in the aforesaid facts and circumstances, the impugned order of dismissal is fit to be set aside. Principle of natural justice also was not. What natural justice? Not was not hurt, not behind Hurt. when he So was cause behind मिला था bar. ना? Hurt मिला but So cause मिला था ना? so cause का जो so cause The Learned Counsel has also submitted that the principles of natural justice were not followed. The Learned Counsel, appearing on behalf of the respondent, on the other hand, has opposed the prayer and has submitted that, and has referred to the show cause notice issued to the petitioner as contained in memo number 763 dated 18/6/2013, and has submitted that allegation was levelled against the petitioner that the petitioner, in connivance with the school authorities, had got his name changed and he had full knowledge about the pendency of the case, but this fact was not disclosed. He submits that apart from the aforesaid allegation, there was also an allegation that the petitioner had applied for leave by letter dated 8/4/2013, annexing a copy of annexing a document dated 2/4/2013 by stating that the petitioner was not well, although on 8/4/2013 the petitioner was in custody and the application of the petitioner was not even forwarded through the jail authorities. The petitioner suppressed the fact from the authorities that he was in custody and tried to justify his absence by furnishing false document showing that he was unwell. It is not in dispute that he surrendered before the court on 3/4/2013. The Learned Counsel has also submitted that the said allegation was also one of the reasons to dismiss the petitioner.
He has also submitted that the petitioner was a probationer and therefore the petitioner otherwise also has no right to continue. After hearing the learned counsel for the parties and considering the facts and circumstances of this case, this court finds that one criminal case was instituted way back as on 18/7/1997, and the petitioner, while referring to his class 10 certificate, has tried to submit before this court that the criminal case was in the name of Rameshwar Sao, son of Teko Sao, and the name of the petitioner is Ramesh Kumar Sao, son of Teklal Sao. Declare. Son of Teklal Sao. However, during the course of hearing, the address of the accused in the criminal case and the address of the petitioner is one and the same, which is not in dispute. This court further finds that the petitioner was put under suspension. The petitioner was appointed on probation basis only on 9/11/2012, and he was put on suspension on 16/4/2013 on account of the fact that he was taken into custody in the criminal case. He was suspended with effect from 3/4/2013, the date on which the petitioner has surrendered before the court in the criminal case. A show cause notice contained in memo number 763 dated 18/6/2013 was issued to the petitioner with regard to suppression of the fact that he was facing that FIR was instituted against him way back in the year 1997, and in the show cause notice an allegation was also levelled against the petitioner that the petitioner had filed application for medical leave, application for leave on medical ground on 8/4/2013, annexing a doctor's report. Doctor का report था, surgeon. चिकित्सक लिख रहा है A doctor's prescription dated 2/4/2013. Although on 8/4/2013 he was in custody as he had surrendered on 3/4/2013, and the said application was not forwarded through the jail superintendent, meaning thereby the petitioner had suppressed the fact that he was in custody and tried to justify his absence that on medical grounds. The petitioner had filed a reply to the show cause. The reply is annexed at annexure 9, which is dated 23/10/2013, wherein he admitted that he was in custody since 3/4/2013 and has also stated that the department was aware that he was in custody since 3/4/2013. This court finds that the competent authority has the petitioner in his reply also disputed his identity as Rameshwar Sao, son of Teko Sao, and insisted that he was Ramesh Kumar Sao, son of Teklal Sao, as per his class 10 certificate. Issued in the year 1995, prior to the offence. Issued in the year, said to have been issued in the year 1995. कहाँ है आपका certificate? हाँ, certificate है।
106 issued by the ठीक। case. Lord, one things we एक not. सेकंड प्लीज बीच में डिस्टर्ब मत करिए, हम आपको सुन लिए ना। नहीं, एक ऐसे नहीं, very नहीं, relevant नहीं, topic. प्लीज ऐसे नहीं बीच बीच में नहीं बोलते, हम आपको सुन लिए। ठीक है, इसमें एक नहीं, डॉक्यूमेंट प्लीज होल्ड ऑन, डोंट because disturb for my, doing complete justice. please do for not me. disturb my Yes. thought process, okay? Oh, sorry. This court finds that the fact that petitioner was in custody since 2013 stood admitted, and the competent authority, while dismissing the petitioner, the competent authority order of dismissal किधर है? At annexure 10, page 99. That too without notice. Page number? 99. ये तो एनेक्शन पेज नंबर 99 तो एनेक्शन 9 है ना, उनका रिप्लाई नहीं है। Annexure 10 I am speaking of. Yes. Section 3 का base. And the competent authority, by Finally, my Lord, annexure dismissing 16. the petitioner, Finally, it was annexure 16 after order passed by this honorable court in WBC November. I have annexed. annexure 16 dated 7/3/2022 has taken into consideration the fact that the application for leave has taken into consideration that in the criminal case, Rameshwar Sao, son of Teko Sao, was declared to be absconder, and the charge sheet dated 30/4/2005 was submitted. It has also been taken into consideration that admittedly the petitioner had surrendered in the criminal case on 4/3/2013, and he had filed an application on seeking leave on medical ground on 8/4/2013 with a medical prescription dated 2/4/2013, and the said application was not forwarded by the jail authority, and the petitioner had suppressed the fact that he was in custody in connection with the criminal case. The authority took into consideration that the petitioner had produced false document in connection with this by seeking leave on account of medical reasons, and ultimately had also suppressed material facts and ultimately dismissed the petitioner by the order dated 7/3/2022. In view of the aforesaid finding of the authority in connection with this custody since 4/3/2013, and that he had given
false application regarding seeking medical leave and had not disclosed that he was in custody, and the fact that the petitioner was still a probationer, this court is of the considered view that this court is not inclined to interfere with the order of dismissal, and according Lord, to this, I don't want to interfere your lordship thought process. One relevant document, Lord, it was not considered. कार जो जेल से लेटर दिया गया था, that has not been separate, that was suppressed, Lord, and he is not. कहाँ है वो? कहाँ लगाए हैं यहाँ? इसको तो लगाया नहीं गया था, but बहुत अच्छी बात है। जो चीज रिकॉर्ड पे नहीं है वो हमको दिखाई भी नहीं देता। जो चीज रिकॉर्ड पे नहीं है because the बंदी पत्र was given and it was not considered, it has been suppressed. Of course, it could not be annexed. रिकॉर्ड में नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए हम हजूर थोड़ा सा बोल रहे थे कि इसको रिकॉर्ड के बाद मत बहस किया। ये बहुत रेलेवेंट डॉक्यूमेंट था। 4 डेट से इसमें डेट हो रहा है आपके ग्राउंड पर, और ऑर्डर डिक्टेट करने के बाद ऐसा डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं जो नहीं, रिकॉर्ड उसको पर तो हम बीच में ही बोल रहे थे, जो लेकिन क्या बीच में बोलते हैं, आप उसको कंसीडर भी कैसे कर सकते हैं जो रिकॉर्ड पर नहीं है। बट फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस, फॉर दैट रीजन ओनली आई एम सबमिटिंग एट द हियरिंग ऑल्सो। काउंसिल का काम है कि लिटिगेंट को कंप्लीट जस्टिस दिलाए, जो डॉक्यूमेंट आपके पास है उसको रिकॉर्ड पे लाए। जज का काम नहीं है ये कि डॉक्यूमेंट कंसीडर करे जो रिकॉर्ड पर नहीं है। नहीं, इसीलिए इसको हम चाह रहे हैं, लाइक रिकॉर्ड के बाद मत बहस क्या करिए, हमको एकदम सही ये नहीं लगता। डॉक्यूमेंट था जो, लेकिन अब इनके पास है, लेकिन इट हैज बीन सप्रेस्ड, पॉकेट में रखिए। इनके पास। Appearance from supplementary list, item 1 WPC 5118 from 2016. Yes, petitioner. The petitioner has made a prayer in this writ application for restraining the Forest Department officials from interfering with his right of enjoyment of the property which he is having since last several years. His predecessor in interest was having since 1965 and thereafter. But the fact is like this: the property may not be a piece of land under Khata number is a piece of land melody in Khata number 48, plot number 370. The area in this land plot is 57 decimals, and there is another plot that is 321. The area is 9 decimals. Total is 66 decimals of land is in this area. It is situated in Kamaldi area of the Bukar. According to the petitioner, he has purchased this land in the year 1985 from his predecessor in interest, who was having it since 1960s, and got his name mutated. He is regularly making payment of the rent etc. to the government authorities. But when he started making construction of his house, the forest department officials were interviewed. When was the mutation done? Yes. When was the mutation done? Madam. Was the mutation existing in the name of the predecessor? Must have been existing. Yeah, the rent receipts are there. Rent receipts. What is the first rent receipt? First, it just that is a predecessor that is the first rent receipt is of 8586. That is the first rent receipt. There must be rent receipt in the name of predecessor in interest. Predecessor in interest also. Where is it? We have included our rent receipts from
85, page 23, page 24. 23 starts from 85, 86. Where is the order of mutation? There must be an order of mutation. Your Lordship, can you see the order, annexure 3, the order, which was considered by the Assistant Settlement Officer, the competent authority under Section 89 of the CNTI. Everything has been considered, annexure 3. What is the date? That is that page 5/1/1994. 5/1/1994. Not only of this petitioner, but the several other persons whose matters were also considered by in the same proceeding. Page 26. Have you also got that? Here the case number is 5851 of 1988. This is under section. Yes, we do. This is under section. 89 of CNTI. 89 of the CNTI. 5851 of 88, the petitioner's name is there. Then the order is dated 5/1/1994. The authority says इस पुनरीक्षण बाद के साथ बाद संख्या 5852 बना दया शंकर राम सो देन 5853 बनाम अनिता प्रसाद के मध्य राजीव कुमार चौधरी बाद संख्या 5855 बनाम रामाशंकर वो बाद संख्या 5859. Two cases were of the petitioner, 5851 and then 5859 बनाम मनोज कुमार का एक साथ सुनवाई. दो केस इसका सुनवाई हो रहा था. 58-51 and 58-58. No, 58-88. Not 89. 58 88. 59 है 58 क्या है 88. 88 है 58 88 anyway the two cases of the petitions were being considered. सुनवाई की गई. कारण विषय सामूहिक खेसरा. कहाँ है 58-58? अरे केस नंबर लिखना पड़ता है. My ladyship, there. 58-58 है. Yeah. 58-51 and 58-88. कहाँ है? 58 मेलोडी. आप देखिए पेज नंबर 26 में बॉटम. Ladyship, page number 27 में दे. नहीं चलिए हम करेक्ट कर लीजिएगा बात. लास्ट बट वन लाइन मिनट ऑन द सेम पेज. बाद संख्या 58-88 बनाम मनोज कुमार. अगेन मेलो द सेम petitioner. So his two cases were there before the authority. खुद का एक साथ सुनवाई की गई. कारण बाद विषय शामिलक खेसरा नंबर 370 वो 20 एक ही है. यह सभी पुनरीक्षण बाद प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा प्रविष्ट कर इस न्यायालय में सुनवाई हेतु भेजा गया. सर्वेयर के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि बाद संख्या 58 51 88 और 58 58 88 के बाद this 58 88 minute appears to be mistake minute because that is 58 के बादी मनोज कुमार का दखल मौजा कमालडी थाना साकिन खेसरा नंबर 370 अंश 381 अंश हाल खेसरा नंबर 41 69 एंड 71 वो 84 के अंश भाग पर है. आवेदक के द्वारा हाल खेसरा 87 वो 71 पर दावा किया गया है. मतलब देयर आर चेंज. मतलब आफ्टर एवरी सेटलमेंट the plot number and खाता number is changed. That's why the change number has also been given. सुधार आवेदन के द्वारा हाल खेसरा 41 और 84 पर दावा हाल खेसरा 87 के स्थान पर किया गया. सुधार आवेदन स्वीकृत किया गया है. सुधार आवेदन स्वीकृत किया गया है. प्रतिवेदन के अनुसार बाद संख्या 58-52 के वादी का दखल मिला. आई एम नॉट कंसर्न विद दिस केस. इट विल नॉट कैन एस्केप मिला फ्रॉम दिस पार्ट. Then come to
other page, madam. Page 29. 29. 29, madam. Page 29. Lots of can come where the consideration starts. Madam, the last paragraph. प्रतिवादी वन विभाग बिहार सरकार तथा शिव प्रसाद महतो ई को सूचना निर्गत किया गया। प्रतिवादी शिव प्रसाद महतो ई सूचना के बाद भी उपस्थित नहीं हुए। प्रतिवादी वन विभाग की ओर से उनके प्रतिनिधि दो तिथि में ही उपस्थित हुए, परंतु इसके बाद न तो अपनी दावा का कोई प्रमाण दाखिल किया गया और न ही वादीगण के दावों को प्रतिवाद ही किया गया। साविक सर्वे के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि साविक खेसरा नंबर 20, 321 और 370 साविक रैयती खाता 48 की भूमि थी, जो साविक सर्वे में खेलू महतो ई के नाम से दर्ज था। वादी गण के द्वारा दाखिल प्रमाण उनके संबंधित बाद में दाखिल है। वादी मनोज कुमार चौधरी पिटिशनर में बाद संख्या 58, 51, 88 और 58 यहाँ करेक्ट किया हुआ है। 88 का प्रमाण बाद संख्या 58 में दाखिल है के अनुसार वादी ने रजिस्ट्री के बाला संख्या 6134 दिनांक 10/7/85 के द्वारा विक्रेता राम प्रताप पांडे पिता देवधारी पांडे को दुखू महतो पिता नकुल महतो से मौजा कमल डी थाना 31 थाना 50 साविक खेसरा नंबर 370 में रकबा 57, वो खेसरा नंबर 321 में रकबा 9 डिसमिल कुल 66 डिसमिल खरीद किए हैं। विक्रेता राम प्रताप पांडे ने उक्त भूमि रजिस्ट्री के वाला संख्या 3970 दिनांक 5785 के द्वारा हाकिम महतो से तथा विक्रेता दारू महतो ने रजिस्ट्री के वाला संख्या 2924 दिनांक 29/2/60 से बीरू महतो से खरीद किए थे। इसकी क्या है रसीद जानकारी संख्या 244 में लगान संख्या जमाबंदी संख्या 244 में लगान संख्या 90 वादी के नाम से कट रही है। सो मतलब द जमाबंदी तो दैट इज द entry that has been noted. Then my lord, so lordship and so far other consideration is about the other petitioner persons that I am. Lordship kindly come to page 33. Page 33, my lord, the middle, in the middle, the word starts. वादीगण की ओर से दाखिल प्रमाण से स्पष्ट होता है कि इन लोगों ने शामिल रैयती भूमि को रजिस्ट्री के वाला द्वारा खरीद किए हैं तथा सरकार के द्वारा इनके नाम से रसीद दी जा रही है। सर्वेयर के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि खरीद की गई भूमि वादीगण का खाता किया हुआ है जिस पर इनका दखल है। सर्वेयर के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि वादीगण के द्वारा जो भूमि दखल किया गया है तथा खरीद किया गया है इसमें अंश भाग का खाता साकी खाता रैयत के नाम से बना है तथा अंश भाग का खाता हाल सर्वे में वन विभाग के नाम से बनाया गया है। इस प्रकार इस बात में दो अलग अलग प्रतिवादी बन गए। वन विभाग की ओर से कोई प्रमाण इन वादों में दाखिल नहीं किया प्रमाण इन वादों में दाखिल नहीं किया गया। इसी मौजा के बाद खेसरा नंबर 16 बात संख्या
16,523/92 बनाम नवचेतन गृह निर्माण सहयोग समिति बनाम वन विभाग के द्वारा दाखिल प्रमाण पत्र से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी वन विभाग का दावा अधिसूचना संख्या 1429/8 दिनांक 24/5/58 मतलब दिस डेट विल हैव द रेलेवेंस 24/5/58 के आधार पर है। इस अधिसूचना के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा कमल डी में साबित खेसरा नंबर 337, 370, 20, 335, 57, 120, 69, 44, 444, 424 में कुल रकबा 62.90 के लिए ही अधिसूचना जारी किया गया है। इस अधिसूचना से यह स्पष्ट नहीं है कि कुल खेसरा से कितना है। अच्छा, इस अधिसूचना से यह स्पष्ट नहीं है कि किस खेसरा से कितना रकबा वन विभाग ने लिया तथा किस ओर की भूमि। वन विभाग को यह निर्देश दिया गया था वे मास्टर कॉपी नक्शा दाखिल करें, परंतु वन विभाग की ओर से दाखिल नहीं किया गया। गत सर्वे अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि साबित खेसरा नंबर 370 का पूरा रकबा 86.20 है। सामयिक खेसरा 370 के पूरे भाग पर वन विभाग के नाम से अधिसूचना नहीं है। बाद में दाखिल प्रमाण से स्पष्ट होता है कि साबिक खेसरा नंबर 370, 335, 337, 20 और 24 के भाग के लिए अर्जित करने हेतु प्रस्ताव भूमि अर्जन पदाधिकारी को भेजा गया था, जिसका भूमि अर्जन पाद संख्या 43/6061 था, परंतु वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा अदम पैरवी के कारण यह एलए केस 43 खारिज हो गया। इसी बाद में क्या वन विभाग के पत्रांक 1482 दिनांक कंजर्वेटर वन विभाग के पत्रांक 1482 दिनांक 2/3/61 के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि विवादी साबित खेसरा 370 की भूमि रैयती थी, जिसे वन विभाग अर्जित करना चाहता था। वादी गण के द्वारा साबित खेसरा संख्या 370 का जो भाग दखल किया गया है उसे हाल सर्वे में वन विभाग के अंदर दिखाया गया है, जबकि वादी गण के दखल में नहीं। अन्य भूमि रैयती है को निकालकर साबित खेसरा नंबर 370 के अंश भाग पर वादी गण का खाता तथा दखल है। प्रमाणित प्रभावित भूमि सीमाना पर है। हाल सर्वे में वादी गण के दखल कब्जा की भूमि के अंश भाग को वन सीमा के अंदर तथा अंश भाग को साबिक खतियानी रैयत के नाम से दर्ज किया गया है। वन विभाग की ओर से दाखिल प्रमाण से स्पष्ट नहीं होता कि विवादित जमीन वन विभाग की है, जिसे हाल सर्वे में वन विभाग के नाम से दर्ज किया गया है। अतः प्रस्तुत प्रमाण एवं दखल से स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि वादी गण की रैयती भूमि है, जिस पर इनका दखल है। हाल सर्वे में इसकी रैयती भूमि के अंश भाग को वन क्षेत्र के अंदर दिखाया गया है, जो सही नहीं। अतः प्रस्तुत प्रमाण एवं दखल के आधार पर वादी गण के दावा को स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि सर्वेयर के द्वारा दाखिल नक्शा के आधार पर हाल खेसरा नंबर 84 के उत्तर मध्य भाग से रकबा 0.04 तथा हाल सर्वे खेसरा 41 के दक्षिण भाग से रकबा 0.64 कुल रकबा 65 खारिज कर वहाँ खेसरा नंबर 84/1 कायम कर किस जमीन
सहन दर्ज कर अलग नया खाता दर्शाकर खाता दयाशंकर राम पिता कपिल देव राम जाति भूमिहार साकिब रामाशंकर कॉलोनी चास के नाम से दर्ज करें तथा खाता नंबर 54 में लगान ₹1 दर्ज करें तथा वहाँ खेसरा नंबर 44/1 के सटे पश्चिम रकबा 0.04 का खेसरा। अभी किस लिए इतना ये तो ऑर्डर आपके फेवर में है। जी हाँ, ये फाइनल तो हम इस पर रिलाई कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, ही इज नॉट अलाउइंग। डिस्टर्ब कर रहे हैं तो भाई आप इंजंक्शन लीजिए। अब यहाँ से हम लोग क्या ही क्या करेंगे? नहीं, हम ये करना यहाँ पे आप यू आर सीकिंग अ मैनुअल दैट दे शुड बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम डिस्टर्बिंग, यू गो एंड सीक इंजंक्शन। यहाँ से हाई कोर्ट से इंजंक्शन मिलेगा कि वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। When this much is there, that this order is in our favor, and the petitions are there, they are in there. You see, But- there is a difference. There can always be a difference in general between the plot number which is mentioned and a person who is in actual physical possession. There can always be a gap कि plot number 1 लिखा है लेकिन आप actual physical possession में plot number 1 के बाहर भी हैं। ये सारी चीजें यहाँ से कैसे डिसाइड हो और कौन सा प्लॉट नंबर किसका है? आपको अगर वो परेशान कर रहे हैं, यू गो एंड सीक इंजंक्शन फ्रॉम सिविल कोर्ट। नहीं, ये हाई कोर्ट क्या करेगा? in fact, my lord, in these matters, they had also initiated the proceeding under Section BPLE Act against some of So the. that is not the matter here. No, we have. BPLE Act में अगर उन्होंने इनिशिएट किया है, then you have all the more reasons कि भी आप BPLE में पार्टिसिपेट नहीं, करके आप उसको फाइनल हो जाए नहीं, आपके दो- फेवर में। No, notices were itself passed by the High Court on the basis of this very order. Very good. This very order. So when they have been restrained by this court in a proceeding under BPLE Act, the order we have attached. Then why they should not be restrained No, in read jurisdiction क्या restrain करेंगे? mandamus to certainly भाई आप एक बात बताइए, मान लीजिए हम यहाँ से कोई मैंडेमस इशू कर दें, ऐसा जनरल मैंडेमस इशू कर दें, उसके बाद वो उसका वायलेशन करे तो यहाँ से कंटेम्प्ट होगा। तो यहाँ से क्या प्रोसीडिंग हम लोग इनिशिएट करेंगे? नहीं तो यू हैव अ रेमेडी अंडर सिविल कोर्ट, यू गो एंड सीक इंजंक्शन। यहाँ से इंजंक्शन नहीं हो सकता है इन मैटर ऑफ they are my lord the state authority. दे आर स्टेट They are expected to work in accordance with law. दैट्स राइट, दे आर। And if they do not, कोई चिट्ठी आपको इशू किया? if इस they- लेटर इस रिकॉर्ड में कोई चिट्ठी है? my lord, we have brought a fact, my lord, that they were trying to This fact. make plantation on our land. And we have filed IA for that very purpose. Then that's अगर why आपको वो लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप जाके इंजंक्शन ले सकते हैं। यहाँ रीड कोर्ट में तो ये इसका कोई मतलब ही नहीं है। We are not here to decide your right, title, interest, physical relation. I'm not etc. saying, my lord, the And then we cannot act like a civil court and pass an order of injunction, and that to a permanent injunction. नहीं, तो Well, कोई if मतलब they- नहीं है। And 370 is certainly there in the notification. no, the area is 82 acres, but they are only claiming 60. We do not know